हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले वीडियोस में हमने डिस्कस किया था पी ब्लॉक एलिमेंट बोरॉन फैमिली के बारे में। अभी हम डिस्कस करेंगे फॉर द कार्बन फैमिली। उसके ऊपर बेस पे हम कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पिछले वीडियोस में क्वेश्चन नंबर 9 तक किया था हमने, अभी हम 10 से स्टार्ट करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 10 इज it is because of inability of NH2 electrons of the valence shell to participate in bonding that option A, SN2 positive is oxidizing while the PB4 is reducing. Option B, SN2 positive and the PB2 positive are both oxidizing and reducing. Option C is SN4 positive is reducing while the PB4 plus is oxidizing. And the option D is SN2 positive is reducing while the PB4 positive is oxidizing. इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? Option D is the correct answer, that SN2 positive is reducing while the PB4 positive is oxidizing. इसकी एक्सप्लेनेशन हम लोग देख सकते हैं। Inertness of the NH2 electron of the valence shell to participate in bonding or moving down the group is heavier. P block elements is called the inert pair effect, जिसकी वजह से जो PB2 पॉजिटिव होगा दैट इज़ मोर स्टेबल देन PB4 पॉजिटिव। SN4 पॉजिटिव इज़ मोर स्टेबल देन द SN2 पॉजिटिव। इसलिए जो PB4 पॉजिटिव होगा वो इजली रिड्यूस होगा देन द PB2 पॉजिटिव के। तो जो PB4 पॉजिटिव होगा वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, और जो हमारे पास SN2 पॉजिटिव होगा वो इजली ऑक्सीडाइज हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू द SN4 पॉजिटिव। तो इसलिए जो SN होगा वो एज अ रिड्यूसिंग एजेंट आपका एक्ट करेगा। इसलिए द ऑप्शन डी इज़ योर करेक्ट ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ दीज इज़ नॉट अ मोनोमर फॉर अ हाई मॉलिक्यूलर मास सिलिकॉन पॉलीमर? ऑप्शन आप ये ऑप्शन चेक कर सकते हैं। विच इज़ द करेक्ट आंसर? B is the correct option. Explanation is, जो आपके पास B ऑप्शन है दैट वाज द कि जो Me3SiCl कंटेन्स ओनली वन क्लोरीन, इसमें एक ही क्लोरीन है, इसलिए इट कांट फॉर्म हाई मॉलिक्यूलर मास सिलिकॉन पॉलीमर। सिंपल सी बात है। सो इट कैन फॉर्म ओनली डाइमर्स। So the B had that was the correct option. Next question number 12 is, the basic structural unit of the silicate is option A SiO4 4 negative, B is the SiO3 2 negative, C is the SiO4 2 negative, and D is the SiO. Which is the correct answer? Which is the basic structural unit of silicate? Option A is the correct answer. Question number 13, which statement is wrong? A, feldspars are not the aluminosilicates. B, beryl is an example of the cyclic silicate. C, Mg2SiO4 is orthosilicate. Option D, the basic structural unit in silicates is the SiO4 tetrahedron. Which is the correct answer? The correct option is option A, that is the feldspars are not aluminosilicates. This is the wrong statement. जो फेल्सपर है ये 3 डायमेंशनल एल्यूमिनोसिलिकेट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 इज, नेम द टाइप ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द सिलिकेट इन विच वन ऑक्सीजन एटम ऑफ सिलिकॉन O4 negative is shared
A is the linear chain silicate, B is the sheet silicate, C is the pyrosilicate, and D is the three-dimensional. Which is the correct answer here? Here the correct option is option C, that is the pyrosilicate. This is the correct option. Here you can see the structure of pyrosilicate. This. Question number 15. The straight chain polymer is formed by A. Hydrolysis of CH3 SiCl3 followed by condensation polymerization. B is the hydrolysis of CH3 bracket 4 silicon by adding polymerization. Option C is hydrolysis of CH3 twice silicon chlorine 2 followed by condensation polymerization. And option D is the hydrolysis of CH3 thrice silicon chloride followed by condensation polymerization. Which is the correct answer? C is the correct answer, hydrolysis of CH3 twice SiCl2 followed by condensation polymerization. Next question, question number 16. Which one of the following statement about the zeolites is false? A. They are used as the cation exchangers. B. They have open structure which enables them to take up small molecules. C. Zeolites are the aluminosilicates having three-dimensional network. D. Some of the SiO4 4 negative units are replaced by the AlO4 5 negative and the AlO6 9 negative ions in the zeolite. Which is the correct option? This is the correct option. Zeolite are aluminosilicates having three-dimensional network. This is the false statement about the zeolite. अगर हम इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो एक्सप्लेनेशन में ये आएगा कि जो जियोलाइट है दैट हैव द SiO4 and the AlO4 tetrahedrons linked together in a 3D open structure in which 4 or the 6 membered rings predominate. Due to open chain structure they have cavities and can take up water and other small molecules. So the correct option is C. Question number 17. Glass reacts with HF to produce A. SaF4, B. H2SaF6, C. H2SiO3, D. Na3Al(F6). Which is the correct option? B is the correct option. यहाँ पे आप अच्छे से रिएक्शन को देख सकते हैं, समझ सकते हैं प्रोडक्ट क्या बन रहा है, H2SaF6. दिस इज द करेक्ट ऑप्शन बी. क्वेश्चन नंबर 18 इज in graphite electrons are A. localized on every third carbon atom, B. present in anti-bonding orbital, C is the localized on each carbon atom, D is spread out between the structure. Correct option is option D is the correct option. Spread out between the structure. In graphite, electrons are spread out between the structure. This is the correct option. Others are wrong. Question number
अच्छा, इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो ग्रेफाइट के अंदर ग्रेफाइट ईच कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज and the single occupied unhybridized p orbital of the carbon atom overlaps sideways to give the pi electron cloud, which is delocalized, and thus the electrons are spread out between the structure. Okay guys, so D is the correct option. Next question number 19 is, in graphite electrons are A is localized on each carbon atom, B is spread out between the sheets, C localized on every third carbon atom, D present in anti-bonding orbital. ये चीज़ हमने अभी भी डिस्कस की है कि क्या है ग्रेफाइट में जो इलेक्ट्रॉन्स है दैट आर स्प्रेड आउट बिटवीन द शीट्स. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 20th क्वेश्चन की तरफ. Which of the following types of forces bind together the carbon atom in the diamond? डायमंड में कौन से टाइप की फोर्सेस होती हैं? आयनिक, कोवलेंट, डाइपोलर, वंडर वॉल फोर्सेस. This is the covalent type of forces. Next question is, water gas is produced by passing steam through a red hot coke bed, B saturating hydrogen with the moisture, C mixing oxygen and the hydrogen in the ratio of 1 and 2, and D heating a mixture of carbon dioxide and CH4 in petroleum refineries. Which is the correct option? Water gas is produced by how? Correct option is A. Water gas is produced by passing steam through a red hot coke bed. Next question, question number 22. Glass is a what? Liquid, solid, supercooled liquid या फिर transparent organic polymer. Which is the correct option? Its correct option is C. That is a super cooled liquid. And now the last question is, the substance used as a smoke screen in warfares is A. SaCl4, B. PH3, option C. PCl5 या फिर ऑप्शन डी एसिटाइलिन. विच इज़ द करेक्ट ऑप्शन? A is the correct option. That is the SiCl4. This is the correct option. Here you can see the explanation. That is the option A. SaCl4 get hydrolyzed in moist air and gives white fumes which are used as a smoke screen in the warfare. तो थैंक यू वेरी मच गाइस मेरा वीडियो देखने के लिए. अगर आपको लग रहा है कि इससे आपको कुछ फ़ायदा हो रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर माई चैनल एंड लाइक माई चैनल. थैंक यू वेरी मच. लाइक करेंगे, अगर शेयर करेंगे, अगर आप इसको सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे भी ऐसा लगेगा कि मेरे ये सब करने का आप लोगों को कुछ फ़ायदा हो रहा है और मैं आगे से आगे और ज़्यादा वीडियोस अपलोड करूँगी. थैंक यू वेरी मच.